गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, होप यू ऑल आर वेल। और पढ़ाई भी हो रही है, होमवर्क पूरा करना है, काम पूरा करना है, उसके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आप लोग हिल स्टेशन गए होंगे, वहाँ पर माइलस्टोन लगे हैं और उस पर लिखा होता है एग्ज़ाम्पल 15,000 किलोमीटर अबव सी लेवल। क्योंकि ये माउंटेन्स के मेजरमेंट के लिए कहीं तो कुछ बेस लेना पड़ेगा ना, तो सी लेवल को बेस माना जाता है। अब अगर सबमरीन पनडुब्बी पानी में नीचे जाती है तो उसके लिए माइनस हो जाता है। अच्छा, मॉल जाते हैं, मॉल में ग्राउंड फ्लोर हो गई 0, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर प्लस प्लस होता गया, और वहाँ पर बेसमेंट भी है। तो बेसमेंट में जनरली कार पार्किंग होती है, -1 -2। सपोज़ आप गए हैं और कार पार्किंग 2 में की है आपने, बेसमेंट में 2 में, और आपको थर्ड फ्लोर पे जाना है, तो आपने कितनी फ्लोर कवर की? इधर -2 है नीचे और ऊपर +3 है। इस केस में हम इंटीजर्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम दोनों फ्लोर्स को प्लस कर रहे हैं, 2 नीचे की और 3 ऊपर की, तो टोटल 5 फ्लोर हम ले रहे हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे। हम तो देख पा रहे हैं बच्चों आपको, और हम आपको भी देखना चाहते हैं, तो अब व्हाट्सएप पे अपनी पिक लगाएंगे तो हम भी आपको देख पाएंगे। Now there is 7th question from exercise 1.4. An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meter per minute. If the descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it make to reach -350 meter? So here, this is ground level, this is 10 meter distance, or elevator is coming with the speed of 6 meter per minute, and here -350 meter. So we will add total distance, 350 plus 10, total 360 meter distance, and time is equal to distance upon speed. Distance is 360 meter and speed is 6 meter per minute. Meter will cancel, 6 6 are 36, 60 minute means 1 hour. Then 6th question. In a class test, 3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer, and no marks for attempting the question. Radhika scored, this is first part. I will explain first part to you, second you will try. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answer, how many questions has she attempted incorrectly? So here is the solution. For each correct answer 3 marks, for each wrong answer -2. Radhika scored 12 correct answers. She solved 12 correct answers. Then 12 correct into 3, 36 marks. Total she got 20 marks. So correct marks into 3 plus wrong into -2, total is equal to 20. So this is, let x mark questions are wrong. X multiply by -2 because for each wrong answer -2 marks. For x questions, x into -2, that is -2x. 36 marks for correct answer, -2x should be equal to 20. Total marks she got 20. Then 20 will come this side with -20. -2x will go at that side with 2x. This is 16 upon 2. X is equal to 8. So number of wrong questions are 8. Children, you must have tried exercise 1.3. Now there is question 5. Find the product using sortable property. So let us discuss this question. Here -48 make this pair plus this pair. Then -48 is common. So take -48 common. 26 plus -36. Using
distributive property. Then minus 48, 26 minus 36, minus 10, minus into minus plus 480. This is the answer. And if we do not use property, then see the method. 26 into minus 48, this answer. Here you need some calculation. Then this into this, again do calculation, adding, we get the same answer. Now you can compare which method is easy. Here this is the calculation. So if you know the method, no need to do this all work. Then find product. Minus 41 into 102. Using property, 102 is break into part, 100 plus 2. Then by the distributive property, this into this plus this into this. Minus 4100 minus 82. Answer is this. Or directly you can do this. But in our method, we have to do by this method. Next is example 785 into this. Again, we see the easy method. This we can write in 10,000 minus 1. Always multiplying by this is 1000 or 1 is more easy than multiplying 9999. So this into this minus this into this. So by subtracting, we get this answer. Now this is the homework. By the same method, you try these questions. Complete up to exercise 1.4 and show all work to me on Sunday, that is 3 May 20, from 6 to 7 p.m. on personal mobile number with name and class.